Hello students, we have started the preparation of carboxylic acid, and in that we studied the from nitrile or and amides, and from acyl chloride and anhydrides. So now we'll study the preparation of carboxylic acids from esters. So carboxylic acids can be obtained from esters either by acid hydrolysis or alkaline hydrolysis. So first is acid hydrolysis. Esters on hydrolysis with dilute mineral acids like dilute HCl or dilute H2SO4 give the corresponding carboxylic acids. Ester RCOOR dash. Here two R dash are different, plus water. In presence of dilute H2SO4 we have to heat it. So hydrolysis will take place and we will obtain carboxylic acid along with alcohol. So this is the method of preparation of acid hydrolysis of esters. तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है along with alcohol. So next is from alkaline hydrolysis of ester. See, using alkali like dilute NaOH or dilute KOH from the solution of water soluble sodium or potassium salt of the acid, that is carboxylate. On acidification with concentrated HCl, free acid is formed. So here we have to use NaOH or KOH alkali as a alkali, and they are water soluble sodium salt and potassium salt of acid. So oxalate is formed, and on acidification with concentrated HCl we will get carboxylic acid. So here methyl propionate reacts with dilute NaOH and we have to heat it, so we'll get sodium propionate, sodium salt of this along with methanol. So this is on acidification with HCl, it will give propionic acid plus NaOH. So this is the method. Also it is also called as saponification. The sodium or potassium salts of higher fatty acids are known as soaps. Higher acids means over here only it is a propionate. So here carbon atoms are increased. Number of carbon atoms are increased. So it will be called as higher fatty acids. So they are known as soaps. And hence the alkaline hydrolysis from alkyl benzene. Aromatic carboxylic acids can be prepared by oxidation of alkyl benzene with dilute HNO3 or alkaline or acidic KMNO4 or chromic acid. The entire alkaline chain, regardless of its length, is oxidized to carboxylic group. That is, tertiary alkyl substituent on benzene, however, is not oxidized. So this reaction is not possible for tertiary, but we can study for primary and secondary. So toluene is the first example. Toluene reacts with KMNO4 KOH in presence of heat. So first it will give potassium benzoate, and on hydrolysis it gives benzoic acid. So cumene is the secondary group is there, means toluene, benzene, aromatic group is there, and along with aromatic it is having alkyl group. So that alkyl group is secondary, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन एटम अटैच है, तो इट इज़ अ सेकेंडरी. सो KMNO4 and KOH is a reagent is used for this reaction, and we have to heat it and we'll get the potassium benzoate. On hydrolysis we'll get benzoic acid. So aromatic acids are prepared by alkyl using alkyl benzene in presence of KMNO4 or chromic acids and KOH. So नेक्स्ट इज़ द प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स. सो अल्कीन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. सो सी दिस फिनाइल इथीन. सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स by KMNO4 in dilute H2SO4. So phenyl ethene is reacts with KMNO4 in presence of dilute H2SO4. It will give
benzoic acid. So oxidation will takes place here. So after oxidation with phenylethyne, it will give benzoic acid. And next example is cyclohexene is treated in presence of KMnO4 and H2SO4. It will give adipic acid. So this is a open chain carboxylic acid called as adipic acid, and it is a saturated acids. So next is from preparation of Grignard reagent. We know the Grignard reagent, that is RMGX. See, this Grignard reagent in a dry solvent is added to a solid carbon dioxide. It is also called as dry ice to give carboxylic to give a complex which on acid hydrolysis gives corresponding carboxylic acid. So first of all we have to take Grignard reagent in presence of dry ether, and it will react with dry ice. So it will give a complex involving RCOOMgX. This is a complex, unstable complex. So immediately it will lose into carboxylic acid on hydrolysis, acid hydrolysis. So carboxylic acid is formed along with MgX and OH. So these are the reactions where we can see the preparations of carboxylic acids. So you will write down all the reactions from, that is preparation of carboxylic acids, in your notebook, and after this we will study the physical properties. Physical properties, in this we are going to study the of aldehydes and ketones, ये सब हमें देखना है. So nature of intermolecular forces. See, carbonyl bond means the CO bond is there, that is called as carbonyl bond. In aldehyde and ketones is a polar covalent bond. This is a polar covalent bond because oxygen is a polar atom. Its electronegativity is higher than carbon. So as a result, these compounds contain dipole-dipole force of attraction. The molecules orient in such a way that हैव अपोजिटली पोलराइज एटम्स फेसिंग ईच अदर. तो ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं अपोजिट चार्जेस को जो फेसिंग ईच अदर. सी दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज देयर, कार्बन डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन. Oxygen is requiring negative charge, that is partial negative charge on oxygen and partial positive charge on carbon. So they are facing with oppositely, like oxygen is facing to carbon, opposite charge, and here carbon is facing to oxygen which is having opposite charge, polarity. So this is dipole-dipole interaction in carbonyl compound. So carbonyl compound of carboxylic acid contains oxygen hydrogen bond which is responsible for formation of hydrogen bonding. Thus carboxylic acids have strongest intermolecular force of attraction. कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कैसे होता है, it is the over there oxygen hydrogen bonding is there, so hydrogen bonding is there along with oxygen, so that bond is strongest among this. तो कार्बोनल कंपाउंड में से भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट. द लिस्ट इज गिवन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस. Boiling point, the physical state or boiling points of aldehydes and ketones. See, formaldehyde is a gas at room temperature and has a irritating odor. Irritating means बहुत गंदा, जो हम bear नहीं कर सकते. Acetaldehyde is extremely volatile. Volatile means it is, if you keep open it will automatically evaporates into the atmosphere. So it is a volatile colorless liquid. Higher aldehydes have pleasant odor. Higher aldehydes means जो ज़्यादा हायर नंबर के aldehydes है उनका स्मेल अच्छा है. जैसे एसीटोन, एसीटोन इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड हैज़ अ प्लेजेंट ओडर. उसका स्मेल अच्छा है एसीटोन का. इट इज़ अ नेल पेंट रिमूवर. बट मोस्ट ऑफ द हायर कीटोन्स हैव ब्लैंड ओडर्स. इसे अलग ही स्मेल है उनका. Increasing the boiling points in the homologous series of aldehydes and ketones are listed in table 12.4. देखो, in this it is given methanol, ethanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol. Boiling point is 252, then 94, ऐसे ये increase होते जाता है.
कीटोन के बारे में भी ऐसे बॉइलिंग पॉइंट से इनका इंक्रीज होते जा रहा है. ओके. सो नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. The oxygen atom of carbonyl group can involve in hydrogen bonding with water molecules. As a result of this, the lower aldehydes and ketones are water soluble. देखो, it involves hydrogen bonding with water and that's why it is water soluble. For example, acetaldehyde and acetone, they are water soluble. As molecular mass increases, the proportion of hydrocarbon part of molecule increases. देखो, जैसे molecular mass बढ़ता है वैसे इनका एंड वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा इट विल फॉर्म, दे आर लेस सॉल्युबल. सी दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट. कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में दिया है ये. सो फिजिकल स्टेट, boiling points and solubility of carboxylic acid. See, as aldehyde and ketones are having similar properties, but carboxylic acids are little bit different. Lower aliphatic carboxylic acids up to 9 carbon atoms are colorless liquid with irritating odor. देखो 9th कार्बन एटम तक जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं वो कैसे है, दे आर हैविंग इरिटेटिंग ओडर, बहुत गंदा स्मेल है. And the higher homologous are colorless, odorless, like wax like solids, and they have volatility. जिनको देखो homologous series means CH2 group is increasing in the next series ऐसे. And they are colorless, odorless, कुछ odor भी नहीं है, color भी नहीं है. Wax like solid, तो वो wax के जैसे है solids. And they have low volatility, मीन्स वोलेटिलिटी नहीं है, दे आर नॉट वोलेटाइल, वैसे ही रहेंगे वो. सो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लिस्टेड इन 12.5 टेबल. सो हियर फॉर्मिक एसिड बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन. एसिटिक एसिड इज 391. जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. प्रोपियोनिक एसिड 414 केल्विन. ब्यूटारिक एसिड 437. वैलेरिक एसिड 460 केल्विन. तो ऐसे ये बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ता है एज एटॉमिक मोलिकुलर मास इंक्रीजेस. सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन दोज ऑफ अल्केन्स, ईथर्स, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑफ कंपेरेबल मास. तो इनका बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा है. किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, अल्केन से, ईथर से, अल्कोहल, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑफ कंपेरेबल मास. उनका जैसे कंपेरेबल मास है फिर भी दे आर हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट्स. दिस रीजन इज दैट इन लिक्विड फेज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर इन विच 2 मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो डाइमर बनाते हैं. डाइमर मीन्स टू एसिड्स विल कंबाइन टुगेदर and they will have or they will be held with 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऐसे होता है. एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ 1 मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स, thus doubles the size of the molecule, resulting in increasing intermolecular van der Waals forces, which in turns result in higher boiling points. In this case, acetic acid dimer exists even in the gas phase. अगर acetic acid gas phase में भी है तो भी वो dimer form करते हैं. Means 2 molecules will come closer and they will be bonded with each other. Oxygen is bonded with hydrogen of other acids. So in this way, hydrogen bonding is formed. Because of hydrogen bonding, their molecular mass increases, and that's why they will have higher boiling points. So lower aliphatic carboxylic acids containing up to 4 carbons are miscible. Miscible means molecule and solvent water.
मिसिबल मीन्स वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो 4 नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे है, वाटर सॉल्युबल है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। सो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर practically insoluble in water due to the increased hydrophobic, that is water heating interaction of hydrogen part with water। देखो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हायर इसमें जाते हैं, सो दे इंक्रीज द हाइड्रोफोबिक मीन्स दे आर वाटर हीटिंग। वाटर हीटिंग मीन्स दे विल नॉट फॉर्म द बॉन्ड्स विथ वाटर। So aromatic acids like benzoic acids are also practically insoluble in water at room temperature. Water's insoluble carboxylic acids are soluble in less polar solvents like ethers, alcohols and benzenes. कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे वाटर में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन एरोमेटिक एसिड्स डिजोल्व नहीं होती, बट दे आर डिजोल्विंग इन ethers, alcohols and benzene. Next is polarity of carbonyl group. The polarity of carbonyl group originate from higher electronegativity of oxygen relative to carbon as well as the resonance effect shown in the figure. देखो polarity means the oxygen is a polar element because it is try to pull the shared pair of electron towards itself as compared to carbon, and along with this it is having the resonance. So that's why their polarities exist. See this, carbon will acquire positive charge, partial positive charge, and oxygen will acquire partial negative charge, and they will be having resonance, major and minor. यहाँ पे देखो 2 डॉट्स यहाँ पे 2 डॉट्स यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 2 उन्होंने 2 डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ किया है, 4 तो उसके रिमेनिंग है। सो 1 bond is formed with carbon and 1 electron is there, that's why they are having negative charge, और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये माइनर है और ये मेजर। सो रेजोनेंस इज देयर, रेजोनेंस हाइब्रिड, कार्बन ऑक्सीजन they are have attached with 1 bond and 1 dotted bond. So carbonyl carbon has positive polarity, therefore it is electron deficient. As a result, the carbon atom is electrophile, electron loving. It is a susceptible to attack a nucleophile. तो ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है and it is having positive charge, that's why it is going to attack nucleophile. जो नेगेटिव चार्ज के न्यूक्लियोफाइल है उसे वो अट्रैक्ट करेंगे। सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो कैसे रिएक्टिविटी है ये देखो, रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप विच इज रिजल्ट इन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। The group which is result in electrophilicity of carbon. In general, aldehydes are more electronegative or more reactive than ketones towards nucleophilic attack. This can be well explained in terms of both electron or ketones की. So aldehydes are more reactive than ketones because of nucleophilic attack. So first reason is that influence of electronic effect. Alkyl groups have electron donating inductive effect, that is plus I. A ketone has 2 electron donating alkyl groups bonded to carbonyl carbon which are responsible for decreasing its positive polarity and electrophilicity. देखो कीटोन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो कम होती है। सो इन कॉन्ट्रास्ट इन अल्डिहाइड हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बोनाइल कार्बन। दिस मेक्स अल्डिहाइड मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन कीटोन। यही रीज़न है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अल्डिहाइड के ऊपर और कीटोन के ऊपर 2 है। एंड स्टेरिक इफेक्ट देखो, 2 बल्कि अल्काइल ग्रुप्स in ketones come in the way of incoming nucleophile
दिस इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। देखो कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप्स है, तो 2 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से वो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसके लिए वो स्टेरिक हिंड्रेंस बनते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बहुत बड़ा से बल्कि मॉलिक्यूल्स उनके पाथ में आते हैं, सो दे कम इन देयर पाथ, सो दे आर नॉट अलाउिंग टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स कार्बन, that is called as steric hindrance or bulky group is present. On the other hand, nucleophile can easily attack on carbonyl carbon in aldehyde because it has only one alkyl group and it is less crowded or sterically less hindered। मतलब यहाँ पे एक ही ग्रुप बल्कि ग्रुप है तो दूसरी साइड से वो आ सकते हैं, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, सो aldehydes are more easily attacked the न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जल्दी अटैक हो सकता है।